इट्स फाइन मैम, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे जो है ना पहले से आईआईटी दिल्ली में हैं। ओके। राइट, उनमें एडमिशन हो चुका है, तो ये लड़की तो ऑटोमेटिकली कि भाई बड़े बच्चे भी उसी में गए हैं तो इसको पूरी अच्छा। लिए तो मेन यही है कि ये जेई क्लियर कर लेती है। हाँ जी। अच्छा, जेई क्लियर नहीं हो पाता है तो बिट्स प्लानिंग भी है, हमारी फोकस की बिट्स प्लानिंग का है, और नहीं तो फिर लास्ट में तो आईपी है ही। अच्छा, ठीक है। नहीं तो हम ये भी सोचें कि इसको 1 साल दोबारा क्लासेस ज्वाइन कर, कोचिंग ज्वाइन करवा के, गैप करवा के, कि जेई दोबारा क्लियर कर ले दोबारा। To be very honest, we've not kind of digressed in our curriculum specifically for JEE. He's just been a very, very good and a diligent student all through. No extra effort except for him going to Vidya Mandir. He goes to Pritampura, and that also just weekend classes. And effectively, if you really ask me, it's been on the side. It's not that we've neglected school. He's been a topper at school as well. For my son, preparations weren't difficult for us because he actually did not enroll either for FITZI or for Vidya Mandir or for any other institute. He's done it all by himself because he said if his father could, achieve targets without going to any institutions, so could he. But we also have not pressurized him at all. It was entirely on him to sit and to see how exactly things happen, how exactly exams are given asked in JEE and other competitive exams, so that he has a basic idea of what kind of education are we looking at in India. Advanced she will be giving, Okay. and then she will be giving for IISc also, IIST, IISER, Okay. and for NEST also. I have filled up the form. उसमें एक बिट्स प्लानिंग का भरा हुआ है और एक आईपी का भरा है। अच्छा। So BITS is definitely there. Then BIT is what we are looking at, and I have looked at some of the opportunities overseas as well. For UP Technical University and other technical institute in Delhi. Okay. BITS Pilani units. Okay. Considering we are in Delhi, it makes a lot of sense if he gets through Delhi College of Engineering and SIT. I'm very, very keen on BITS. As far as IIT goes, somehow, the children carry a lot of fear factors, so I never wanted to push him to do exceptional education which is required for IIT Advanced. I'm a fundamentally believer in strong academics myself. I'm a very senior professional, and I strongly believe that if they've been really good students, and let me see if my conviction wins. I've told my son, appear for Advanced, you will crack it, you don't have to go through coaching. Okay. But he's sitting with a mind block that no, if you haven't done those manuals which Vidya Mandir has given, it's not going to help. Whereas I don't believe so. So let's see who wins. Okay. Our preference is for biotechnology. Okay. Oh, first preference is going to IIT and then BITS Pilani at this the National Institute of Technology that is located in UP, Okay. Okay. and government colleges in UP with some university, Malvi Engineering College now. It is a university that is most preferable in Uttar Pradesh. रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेरेंट्स का रोल इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को हर बार उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, पर्टिकुलरली जो है ना जब ये बच्चे तैयारी करते हैं और +2 के बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, तब बहुत ज़्यादा सपोर्ट होने चाहिए। क्योंकि उस टाइम उनके अंदर क्या होता है कि एक तो दे हैव टू प्रिपेयर फॉर द कंपटीशन, सेकेंडली उनके ऊपर बर्डन आ गया ये +2 का। So I have just been a nurturer, typically the way the mother should be, very positive reinforcement, motivation, just be around. That's it. ये हमारे एक्सपीरियंस की बात नहीं है, अब तो उसको करना है तो वो अपने तैयारी करेगा, और उसको क्या करना है वो खुद सोचेगा। इसमें और कोई भी पेरेंट्स सिर्फ यही कर सकता है, हेल्प कर सकता है उसको बुक के लिए या टाइम के लिए, वो अपना निकालेगा जैसे क्या करना नहीं करेगा। और हम लोग सिर्फ उसको पुशअप कर सकते हैं कि आप कर सकते हो तो करो। कि मैं रिसर्च करके उसको बताती रही, उसके पास इतना टाइम नहीं होता था, तो मुझे ये लगता था कि उसका जो टाइम बच सके मेरे साथ, हाँ। मैं उसको रिसर्च करके बताती रहती थी कि इस डेट को फॉर्म निकलना है, इस डेट को फॉर्म निकलना है। अच्छा। Helping her in any way, by helping her through net or by getting the books, related books, everything. That was the role of the parents, to encourage this child to do for this, to do that, whatever is best for her. Okay. Entire research in terms of what colleges, etc. So while he goes
goes to Delhi Public School, Arkepuram, the school itself makes a lot of awareness with the children, and a lot of colleges visit them. So he's quite updated. So if I really say I can't take credit of research, he's far more updated than I am. The only thing is he will give me a superficial, view of this college came, this seems to be picking up, this is what my alumni is saying, and I'll go deeper into that. Yeah, parents' role is very vital, and if there is a proper care for the study of the student and parents cooperate with the student, and if there is a guideline of if parent having the technical background, especially as like me, I am also a BTech, and but I'm serving in a government of Uttar Pradesh. But cooperating with the student and the student is self-interested, then there is no problem at all. कि कंडीशन पर कंडीशन लगा दी, कहते हैं कि मीन्स हम बच्चों का जो है ना बोझ हल्का कर रहे हैं, परंतु बोझ बढ़ा दिया इन्होंने। क्या किया, +2 में कंडीशन लगा दी 75 से अबव होने चाहिए, राइट। और फिर मेंस की कंडीशन लगा दी, मेंस का 1 लाख में होना चाहिए, राइट। उसके बाद अभी तक बच्चा जो है जब तक एडवांस तक नहीं पहुँचेगा वो बच्चा तब तक बर्डन में। पहले इनके ऊपर बर्डन नहीं होता था। मेरे दोनों बच्चे ने, पहले बेटे ने की है, बेटी ने की है। उसका क्या था कि मीन्स इसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए, 60% कंडीशन है, अंडरस्टूड था, 60% उसके आराम से आ जाएंगे, ठीक है। फिर जो है डायरेक्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में पेपर हो जाता था और वो बच्चे फ्री हो जाते थे। अब तो उनके ऊपर पहले तो ये कंडीशन हाई बोर्ड में आएंगे या नहीं, और फिर बोर्ड में क्या है, एक तो लैंग्वेज। ये बताओ मैम, लैंग्वेज में और साइंस का क्या कंसर्न है, राइट। लैंग्वेज की कंडीशन लगा दी। फिर जो है 5th सब्जेक्ट जो है उसमें क्या पता बच्चा कैसा स्कोर करे। इनको IIT के लिए क्या चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चाहिए, तो फिर आप उनका स्कोर देखो ना, राइट। ये 2 स्कोर ऐड कर दिए, जिसकी वजह से बच्चा बोर्ड के टाइम में भी बच्चा प्रेशर में है। दूसरी चीज़ ये मेंस में क्या होता है कि काफ़ी सारे ऐसे, मतलब जैसे यूँ मान लीजिए कि आप इजी टॉपिक से इंक्लूडेड ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हो जाते हैं जो उस लेवल के होते ही नहीं है। CBSE, yeah, there is a if giving a particular board preference, privileges to a certain board, that is not justice to the student. If it includes the overall in view of the all boards, including UP board, Bihar board, or SSC board, SSC board, if they include the all common points, all syllabus of the all common, that must be the parity to all children. Belong to all boards, not only the CBSE. There may be the favoritism for CBSE following their own syllabus. I actually don't know much about it because I am not interested in him going in for I don't know, be it for IIT or something, because he and me both are not into IITs. But and exactly not too much knowledge on the JEE marking schemes or evaluations, because we were concentrating only on the CBSE marking scheme, the kind of question paper that came in maths and physics and English. So I think parents like me are more concentrating on what happened in the CBSE exams rather than what is happening in the JEE exams, because those results are more troublesome for us, are going to be more troublesome if they don't do well.